Assalamu alaikum. Today we are going to start our next chapter, that is the protection of carbonyl group. Carbonyl group, if we can say the examples of the class of compounds are aldehydes and ketone most prominently. Uh, in this chapter today we will discuss about the introduction of the why we need the protection of the carbonyl group, and also discuss acyclic ketals or acetals as a protecting group of aldehydes and ketones. Course role of protecting group in organic synthesis, as you know, and my name is Dr. Tahir Makbul. Objectives of these lectures are: we will cover why carbonyl compounds need protection, mean why during the synthesis we need to protect the carbonyl compounds or the carbonyl group. Secondly, comparison of reactivity of different carbonyl compounds, because sometimes we have to selectively protect one carbonyl in the presence of another species, another carbonyl group. Similarly, we will also discuss the common protecting group for carbonyl compounds. And lastly, we will discuss about the installation, characteristics, removal and applications or examples of ketals and acetals as protecting group. So let's start with introduction. So why we need to protect aldehydes or ketone during the course of our synthesis? The most important reason is that in the sense aldehydes or ketones or carbonyl compound, the sensitive part is the carbonyl group, that is C double bond O group. Why it is sensitive? Because it gives some reactions. There are two main reactions. The first one is nucleophilic acyl addition. In nucleophilic acyl addition, as you know, the carbonyl carbon is electron deficient, and that it attracts the nucleophile attack on the carbon, negative charge went on the oxygen, and it adds up the positive part of the nucleophilic substrate. So it leads to the nucleophilic acyl addition. Secondly, oxygen of the carbonyl group also act as a base, but in the presence of some suitable acids. So it results to the formation of an oxygen stabilized carbocation, because if oxygen donates its lone pair to some acids, it will carry positive charge, which can be stabilized by the C double bond O, the pi bond. So it can be delocalized of the carbon, so oxygen stabilized carbocation can be formed. Secondly, if it happens, it will lead to the removal of oxygen as a good protecting group, as a good leaving group, and it will results in the formation of a substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक एसाइल एडिशन आप लोगों ने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी होंगी. इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूँ. साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए आपने पढ़ी होगी, याद होगा. साइनो ग्रुप अटैक करता है कार्बोनाइल के ऊपर, एंड देन जो वो है वो प्रोटोनेट होता है, तो आपके पास साइनोहाइड्रिन बना. दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक acyl addition. So sometimes substitution can also leads by the formation of oxygen stabilized carbocation. So which reagent carbonyl group may have to be protected against the attack by various reagents. So which are these reagents? The first one is the nucleophile. Nucleophile may be strong, it may be moderately strong, or it may be an organometallic reagent. Similarly, it may also have to protect against the reducing agents. The reduction may be acidic or basic, it may be catalytic, or it may be carried out by hydride producing agents. Similarly, we may also have to protect the carbonyl group against some oxidizing agents. So कार्बोनाइल के हवाले से अगर हम देखें तो आपके पास एल्डिहाइड्स भी है, कीटोन भी है, समटाइम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी हैं.
So it is possible to protect a reactive carbonyl selectively in the presence of a less reactive one, because there is a difference in order of reactivity of all these class of compounds. So look at the table. As you know, aldehydes आपको पता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं. अगर हम सिंपल सिर्फ एल्डिहाइड्स या कीटोन को आपस में कंपेयर करें तो एल्डिहाइड्स आर मच मोर रिएक्टिव दैन द कीटोन्स. Specifically, if we discuss aldehyde or compare aldehyde aliphatic with the aromatic, so aliphatic aldehyde are more active than the aromatic one. After aldehyde there are ketones. Among the ketones, acyclic ketones and cyclic hexanone. These two ketones have almost similar reactivity, but these are more reactive than cyclopentanone, which in turn more reactive than alpha beta unsaturated ketones or alpha alpha disubstituted ketones. And finally the aromatic compounds. So here is a table which you can follow while protecting a reactive carbonyl group selectively in the presence of a less reactive one. नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोटेक्टिव ग्रुप जो कार्बोनाइल ग्रुप के लिए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन से हैं? दो कैटेगरी हैं बेसिकली. द फर्स्ट वन इज एसिटाल और कीटल. ये साइक्लिक भी हो सकते हैं, एसाइक्लिक भी हो सकते हैं. सिमिलरली थायोएसिटल और कीटाल्स, ये भी उसी तरह जिस तरह एसिटाल या कीटाल साइक्लिक और एसाइक्लिक हैं. दीज आर आल्सो दी एसाइक्लिक और साइक्लिक. और यही जो दो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और डेरिवेटिव नहीं है कार्बोनाइल के जिनको प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ड्यू टू सम इशू, स्टेबिलिटी इशू या उनकी फार्मेशन के लिहाज से उनको कम यूज़ किया जाता है. सो द कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म्स अ नंबर ऑफ अदर वेरी स्टेबल डेरिवेटिव्स. दीज आर लेस यूज्ड एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप. रीज़न उसकी देख लें, दो रीज़न हैं, दो या तीन. ऑफ द ग्रेट डिफ़िकल्टी इन्वॉल्व इन देयर रिमूवल बिकॉज these are quite stable. Sometimes there is stability issue. In other words, you can say such derivatives include cyanohydrins. मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी आपके पास. Then there is हाइड्राजोन्स. कार्बोनाइल के हाइड्राजोन आपको पता है बड़े मशहूर वर्सटाइल है, बायोलॉजिकली एप्लीकेबल कंपाउंड्स हैं. इमीन्स बना सकते हैं आप, ऑक्सीन्स बना सकते हैं, एंड साइनिक कार्बोजोन बना सकते हैं. So these are the other derivatives which can be formed by using the carbonyl group, but due to stability issue or due to their difficulty in their removal, these are mostly avoided to be used as protecting group. So हम अपने पहले protecting group या पहली क्लास पे चलते हैं, that is ketal or acetals. In this lecture we will discuss only acyclic ketals or acetals. So key feature इसके सबसे पहले देख लेते हैं. The first one is दो मोस्ट कॉमन जो हैं दैट इज़ डाईमिथाइल एंड डाईएथाइल कीटाल्स एंड एसिटाल्स. ये मोस्ट कॉमन है, तो लिहाजा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. सबसे पहले इनकी स्टेबिलिटी है. दीज आर क्वाइट स्टेबल बिटवीन द पीएच रेंज ऑफ 4 to 12. सो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड के अगेंस्ट ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है. इन एडिशन दीज आर आल्सो स्टेबल टू सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, न्यूक्लियोफाइल्स, hydrides, organometallic reagents. It means you can carry out by placing ketals or acetal as a protecting group on a carbonyl group. You can subject the substrate towards oxidizing agent, catalytic hydrogenation, nucleophile, hydrides or organometallic reagents. On the other hand, these are sensitive to aqueous acid. It is a common method for its cleavage. Similarly, some lewis acids can also break this group. So why we use methanol and ethanol most commonly are diethyl or dimethyl ketals are most common. There are some reasons. The first reason is they give high yield of the products. While we treat the carbonyl group with methanol or ethanol, we will get high yield of acyclic ketals or acetals. The second reason is
it can easily be removed because after the cleavage the alcohols the released alcohol, that is the methanol or ethanol, have a lower molecular weight. As you know that molecular weight is directly related with the boiling point, so it has an inverse relationship. That's why they can easily be removed as a byproduct after deproduction. The last reason is methoxy unit is give simple singlet. आपको पता है CH3OH में दो टाइप ऑफ सिग्नल आएंगे, एक कार्बन के साथ लगे हुए तीनों जो हाइड्रोजन हैं, दे विल गिव वन सिंपल सिंगलेट इन H1 NMR spectrum. So this simple singlet will not obscure other important signal of the protected substrate. तो आपको NMR की इंटरप्रिटेशन जो है वो आसानी से आप कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथॉक्सी इन द प्रेजेंस ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप, और समटाइम मेथॉक्सी भी होगा तो वहाँ पे आपको एक क्वार्टेट और एक आपके पास एक ट्रिपलेट आएगी और एक क्वार्टेट आएगी. सो मेथॉक्सी जो है वो सबसे सिंपलेस्ट सिग्नल देगा H1 NMR में, जिसको आप इजीली डायग्नोज कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो दूसरे प्रोटेक्टेड सबस्ट्रेट के जो सिग्नल्स हैं उनको ऑब्स्क्योर नहीं किया जा सकता. चलें जी, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं. मैंने यहाँ पर मोस्ट कॉमन मेथड लिखा है और जनरली लिखा है. Here we will subject the carbonyl compound to react with methanol or ethanol. Usually we use acid catalyst, but in anhydrous conditions, so we get dimethyl or diethyl acetals or ketals. एसिड कैटलिस्ट में वैरायटी अवेलेबल है आपकी. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट की हैं. ड्राई HCl गैस यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एथरेट और BF3.OET ट्वाइस OET2 यूज़ कर सकते हैं. pyridinium पैराटोलुईन सल्फोनिक एसिड और PPTS भी आप यूज़ कर सकते हैं. रिमूवल के लिए जनरल मेथड अगर आप देखें तो acetals or ketals are treated with trifluoroacetic acid, oxalic acid, so you can get the carbonyl compound. Alternatively अगर आप देखें तो एक और मेथड भी यूज़ होता है जिसको हम नाम देते हैं, दैट इज़ ट्रांसकीटालाइजेशन. Here we will add acetone in the presence of an acid catalyst such as PPTS in the acetal and ketal. What will happen? ट्रांसकीटालाइजेशन मीन जो एसिटाल और कीटाल बना हुआ है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड जो सबस्ट्रेट है, उसमें जब आप एसीटोन डालेंगे तो एसीटोन बेसिकली एक नई कीटाल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एब्स्ट्रैक्टिंग दी एल्कोक्सी ग्रुप्स. सो जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है वो रिलीज़ हो जाएगा. तो इसको हम ट्रांसकीटालाइजेशन का नाम देते हैं, यानी कि आप एक और कार्बोनाइल कंपाउंड उसके अंदर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, और आपका सबस्ट्रेट जो है वो रिकवर हो जाता है और एक न्यू कीटाल जो है वो रिएक्शंस के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको बाद में रिमूव कर लिया जाता है. एग्जांपल्स पे आते हैं. तो सबसे पहली जो एग्जांपल है इसमें अगर आप नोट करें, हमने यही मेथानॉल का जिक्र किया था मोस्ट कॉमनली यूज़. तो यहाँ पे मेथानॉल इस मेथॉक्सी ग्रुप को एसिटाल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हुई है. बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है. इस कंपाउंड्स को हम मेथानॉल ट्राई HCl 2 मिनट रिफ्लक्स है और उसके बाद 12 मिनट स्टैंडिंग है, तो आपके पास जनाब एसिटाल आपका बन जाता है. रिमूव करने के लिए 2 नॉर्मल H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ मेथानॉल वाटर और रिफ्लक्स कर दें तो आपके पास ये कंपाउंड दोबारा रिकवर हो जाता है. अगर आपने इस एग्जांपल की फर्दर डिटेल देखनी हो तो ये रेफरेंस मैंने दिया है जर्नल ऑफ केमिकल सोसाइटी का, तो ये आप देख सकते हैं. द नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें बेसिकली 2 कीटो ग्रुप हैं आपके सबस्ट्रेट के अंदर जिनको आप जिनमें से आप एक को सिलेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो रीजेंट यूज़ हुए हैं दैट इज़ मेथानॉल, PPTS, यहाँ पे 55 डिग्री सेंटीग्रेड 3 आवर रिफ्लक्स है और 89% इसकी यील्ड है. अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपका ये वाला जो कीटल जो है वो सिलेक्टिवली प्रोटेक्ट हुआ है. इसकी रीज़न अगर आप देखें तो बिल्कुल आप स्टीरिक क्राउडिंग के ऊपर ये सारा मलबा गिरा सकते हैं, बिकॉज स्टीरिक क्राउडिंग ऑफ इथाइल ग्रुप जो है it may have hindered the approach of this methanol
towards this keto group. So this keto group which have no ethyl group in its vicinity will be protected selectively. ये उसका रेफरेंस है, आपने फर्दर डिटेल्स देखनी है तो इस रेफरेंस में देख सकते हैं. दिस इज़ अनदर एग्जांपल. यहाँ पे हमारे पास जो है क्लीवेज की एग्जांपल है. बेसिकली ये यहाँ पे आपके पास एसिटाल बना हुआ है जिसको क्लीव किया गया है बाय यूजिंग एम्बर लिस्ट. एम्बर लिस्ट आपको पता है पॉलीस्टाइरीन बेस्ड आयन एक्सचेंज रेसन्स हैं. दीज आर एक्सलेंट सोर्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. सो बेसिकली ये सोर्स ऑफ एसिड के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं और यहाँ पे एसीटोन इस्तेमाल की गई है. ट्रांसकीटलाइजेशन की अप्रोच भी आप इसे कह सकते हैं. वाटर और 20 आवर्स के अंदर आपका जो एसीटाल है उसको कन्वर्ट किया गया है, क्लीव किया गया है इनटू योर फार्माइल ग्रुप. ये जनाब इसका रेफरेंस है. सिंथेसिस का पेपर है 1984. अब यहाँ पे आपके पास वो एसिटाल की क्लीवेज थी. दिस वन इज़ द क्लीवेज ऑफ एसिटाल एंड दिस एग्जांपल इज़ द क्लीवेज ऑफ अ कीटोनिक ग्रुप. तो यहाँ पे ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड रूम टेम्परेचर पे यूज़ किया गया और वर्कअप किया गया विद सोडियम बाइकार्बोनेट. 98% यील्ड है. तो आपका ये जो कीटोन है ये रिकवर हो गई है, यानी कि कीटल को क्लीव किया गया इनटू रिस्पेक्टिव किलोन. इसका रेफरेंस देख लें. ये रेफरेंस टेट्राहाइड्रोन लेटर है 1986 का पेपर है. ये एक और रिमूवल की एग्जांपल है जिसके अंदर कीटल को रिमूव किया गया है बाय यूजिंग एसिटिक एसिड एंड वाटर. तो आपके पास ये जो कीटाल है इसको रिकवर किया गया इस कीटोन को बाय ट्रीटिंग दिस सबस्ट्रेट विद एसिटिक एसिड वाटर एंड 89% यील्ड है इसकी. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास दो कीटाल्स हैं. यहाँ पर कंपाउंड तकरीबन सिमिलर है एक्सेप्ट यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल था, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथॉक्सी है. यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों ही कीटॉल हैं. सो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान वाटर रूम टेम्परेचर 12 मिनट्स और 72% यील्ड है. अब अगर आप दोनों कीटॉल्स को कंपेयर करें तो ये सिलेक्टिवली जो है इन कंडीशंस के अंदर ये ग्रुप जो है वो क्या सिलेक्टिवली जो है प्रोटेक्टेड ही रहा है, जबकि ऊपर वाला ग्रुप जो है वो रिमूव हो गया है. तो यहाँ पे भी आप रीज़न जो लेके आ सकते हैं, सॉरी रीज़न वही है कि यहाँ पे इस कीटाल की विसिनिटी के अंदर मेथॉक्सी ग्रुप था. बाकी तो ये आइडेंटिकल हैं बिकॉज दोनों के अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है. तो दिस इज़ ओनली द पॉइंट ऑफ डिफरेंस. So you can say that this methoxy group basically hindered or in other words it protected this ketals. So ये थोड़ा सा naked ketal group है जो कि ऑक्सैलिक एसिड से 72% यील्ड के साथ रिमूव किया गया है. Further details you can see in this Journal of American Chemical Society volume 103 page 5813 1981. So this is all about the acyclic ketals and acetals of protecting group. In this lecture we have discussed about the introduction, some basic things like why we need to protect the carbonyl compounds. So we have compared the reactivity of different classes of carbonyl compounds, and then we have illustrated the importance of methanol and ethanol as a source of alcohol to form the acetal or ketal. And finally we have discussed the different types of protecting groups which can be used for carbonyl compounds. And as an example, as a first example, we have discussed acyclic ketals and acetals as a protecting group for carbonyl groups. So next lecture inshallah we will see about the cyclic ketals and acetals as a protecting group. We will discuss the installation, its characteristics, and other examples of cyclic ketals and acetals which are being used as protecting group for carbonyl group. So तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह.